Hello students, welcome to RS Educorner. So let's discuss today's first question, that is gymnosperms have taproot system, seeds enclosed within the fruit, rhizoids and branched stems always. So right option is taproot system. Clear? तो जिम्नोस्पर्म रे हमरो सब बळे टैपरूट सिस्टम ही देखा जाए. ओके टैपरूट स्ट्रक्चर टी मन पके देबा गोटे मेन रूट थिबो एंड तादर सब छोट छोट रूट आस्थिबो. ठीक अछि. Then which of the following has both the male and female cones on the same plant? So that is Pinus. Pinus is a gymnosperm in which both male and female cones are found. It is a dioecious plant, that means both male and female cones are present here, but the male and female cones are present on the same plant but in different branches. Clear? In different branches. Then which of the following plant possesses naked seeded? I have already discussed that gymnosperms are the naked seeded plants, so the right option is gymnosperm. Then the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the megaspore mother cell ta amara कोथरो डेवलप होई थाए माइक्रोस्पोरेंजिया, pollen grain, nucellus. So right option is nucellus. Then coralloid roots have a symbiotic association with photosynthetic green algae, nitrogen fixing cyanobacteria, fungus, photosynthetic brown algae. So correct option is nitrogen fixing bacteria. ओके तो ये टिके भलसे आमे बुझिबा कोरालॉइड रूट्स कोठी मिले इन केस ऑफ साइकास. क्लियर? साइकास रे हमरो कोरालॉइड रूट्स देखा जाए आ तार कोरालॉइड रूट्स जो साइकास रे थाए सेथरे सब हमरो नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी गुडा थांती जो माने कि हमरो हेल्प करंती कोन इन प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स. क्लियर? amino acids. The next question, the cones bearing microsporophyll are known as male strovili. Male strovili. Then pollen grains are released from microsporangium, macrosporangium, megaspore mother cell and archegonium. तो pollen grain टा हमरो कोथरो release हुए, that is from microsporangium. Because हमरो pollen grain टा हला male part टा. ठीक अछि. तो मेगास्पोर मदर सेल और आर्किगोनियम ये सब हेला हमरो फीमेल पार्ट. सो एटा हमरो माइक्रोस्पोरेंजियम रो ही रिलीज करे पोलन ग्रेन. ठीक अछि. देन इन एंजियोस्पर्म्स द स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर्स. तो एंजियोस्पर्म रे हमरो स्पोरोफिल गुडे सब अरेंज सेई थाए फ्लावर्स तयारी करिबा पई. Then which of the following angiosperm is almost microscopic? तो हमरो जहाँ भी देछि यूकेलिप्टस, अकासिया, कोलोकासिया एडा हम सब देखु से, बट ऑल्फिया टा होछि हमरो माइक्रोस्कोपिक. ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्फिया. यूकेलिप्टस समस्त हमें रास्ता कड़े देखु से, अकासिया भी देखु से, कोलोकासिया हमर हैला सारू गछ जोड़ा सेडा भी देखु से, बट ऑल्फिया टा हैला हमरो गोटे माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, बहुत छोटो. Then endosperm of angiosperm is triploid. Already we have discussed that endosperm has
is a 3N product. Okay, endosperm is produced after triple fusion, so that is triploid or 3N. The next question, the plant body is thalloid in Funaria, Salvinia, Sphagnum and Marchantia. So correct option is Marchantia. Marchantia रो बॉडी टा ही हमारा thalloid थाए ब्रायोफाइट रे पढ़ी थे. So this is an important question. In bryophytes, both generations are independent. Gametophytes are dependent upon sporophytes. Sporophytes complete their life cycle. Sporophytes are dependent upon gametophytes. Okay, तो bryophytes रे total मु एटा discussion करिछि जे sporophytes are dependent upon gametophytes. Clear? गैमेटोफाइट टा हमर आगे हुए तापरे स्पोरोफाइट से थ्रू डेवलप करे. ठीक अछि, तो गैमेटोफाइट टा हमर हला इंडिपेंडेंट एंड स्पोरोफाइट टा होछि हमर डिपेंडेंट. जनरेशन जतले बुझैतिली गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन सेतले बुझैतिली जे गैमेटोफाइटिक जनरेशन टा हमर होछि इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइटिक जनरेशन टा होछि हमर डिपेंडेंट. क्लियर? Then which of the following plant kingdom is called amphibians? Very easy question. That is Bryophyta. Already we have discussed so many times. The next question, bryophytes can separated from algae because they possesses archegonia, contain chloroplast, are thalloid forms, have no conducting tissue. So what is the correct option? In case of algae contains chloroplast, this is right. Then these are thalloid forms, that is also right. Then have no conducting tissue, also it's true about algae, but archegonium is found in case of bryophytes only. That's why bryophytes can be separated from algae because of this archegonia. Clear? So this is the right option. Then bryophytes are dependent on water because it be important question. Bryophytes are called as amphibians because they depend upon water. They are found on lands and also they depend upon water for their sexual reproduction. Already I have discussed this. So correct option is the sperms can easily reach up to the egg in the archegonium. That's why bryophytes depend upon water. Okay. Then bryophytes comprise dominant phase of gametophyte which produces spores. तो सब तक ऑप्शंस मु पढुनी. ओके, तो जोटा राइट ऑप्शन खाली कहि देउची bryophytes comprise small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte. Already discussed because gametophyte ऊपर हमर sporophyte टा डिपेंड करूची. ठीक अछि. Then next question, the antherozoids of Funaria are biciliated. Just remember it, the antherozoids of Funaria are biciliated. Then the plant body of moss means Funaria is predominantly gametophyte with sporophyte. Then next question, which of the following is true about bryophytes? They are thalloid. Yes, it's right. This possesses archegonia. It's also right. Then they contain chloroplast. Also right. So correct option is all of these. Clear? Then multicellular branched rhizoids and leafy gametophytes are the characteristics of some bryophytes, not for all bryophytes. Not for all bryophytes,
branch multicellular branched rhizoids and leafy gametophytes are found in some bryophytes only. okay, तो खाली rhizoid देखिकी आमे all bryophytes बोली मारिदबानी ऑप्शन ने कंफ्यूज होवानी राइट ऑप्शन आमे चूज करबा इन some bryophytes the rhizoids are multicellular branched and also leafy gametophytes. Then elater for spores dispersal mechanism is exhibited. It's also very important question. okay, तो elater होजी हमर गोटे प्रोसेस और गोटे mechanism. elater is a mechanism for spore dispersal and that is found in case of Markhansia. okay, in bryophytes especially in Markhansia elater mechanism is found. Then dichotomous branching is found in liver rods. The walking fern is so named because walking fern जोड़ा हमर थाए लीफ भलिया हेतिबो ता लीफ रो टिप को नेकी हमें कोठी की भी लगे देले सेटारो नुआ गछ हे जिवो बा प्रोपागेट हे जिवो. So the walking fern is so named because it propagates vegetatively by its leaf tips. okay, so this is the right option. Then in which of the following would you place the plants having vascular tissue lacking seeds? okay, तो vascular tissue थिबो having vascular tissues lacking seed, तो vascular tissues थिबो but seed न थिबो lacking seeds. okay, so that is pteridophytes. pteridophytes रे हमर कोन हला vascular tissues रहउची but no seeds, lacking seeds. Then which aquatic fern performs nitrogen fixation? Very easy question, all of us know it, that is Azolla. Azolla is known as the aquatic fern which performs the nitrogen fixation. Clear? Then a well developed archegonium with neck consisting of 4 to 6 rows and neck canal cells. okay, तो आर्किगोनियम कहार आर्किगोनियम टा बा एटा गोटे कहार कैरेक्टरिस्टिक बा कहार आर्किगोनियम विथ कंसिस्ट्स ऑफ कहार आर्किगोनियम टा कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 rows of neck and neck canal cells. clear? so that is bryophytes and pteridophytes. in case of both bryophytes and pteridophytes the archegonium is consist of 4 to 6 rows of neck and neck canal cells. clear? Then plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term. the plants माने जो माने reproduce करूचंती through spores like mosses and ferns, तो से माने को कैटेगरी रे आछंती हमरो ग्रुप अंडर जनरल टर्म इज क्रिप्टोग्राम्स. ओके, तो हमरो मॉसेस फॉर्म से माने हमरो ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइटा हे पारे स्पोरोफाइट्स भी. ओके, बट द कॉमन जनरल टर्म इज क्रिप्टोग्राम्स मींस दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लियर? क्रिप्टोग्राम मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन flowering plants. Then come to next question, which of the following is a vascular cryptogram? okay, तो vascular cryptogram कहले हमरा कोन हला नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हला. ठीक अछि. then vascular cryptograms, that means that's a pteridophyte, so that is equisetum. क्लियर? मतलब भास्कुलर टर्म आसला मींस आपण माने सब बळे टेरिडोफाइट एड को ही नजर करिवे. ठीक अछि. तो क्रिप्टोग्राम्स हम जानले कोन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स मींस हमरो टेरिडोफाइट्स आसले. तो मार्कान्सिया हम जानले गुटे ब्रायोफाइट्स, देन सेड्रोस्टा हमरो होची कोन ए दिटा हमरो हेले जिम्नोस्पर्म आछंती. तो हमरो
right option is equigetum. Clear? Then heterospory and seed habit are often exhibited by plants possessing ligule. Okay, तो heterospory and seed habit जोटा अच्छे सेटा को प्लांट रे देखा जाए ना हमरो जो प्लांट रो लिगुल थिबो लिगुल कहले कोन हमरो टिके इट स्ट्रक्चर मन पके दोची सपोज दिस इज द स्टेम एंड एठु हमरो लीफ टा बाहर थिबो जोडा का हमरो ग्रास भलिया लीफ जोडा तो एटी ब्रैक्ट भलिया गोटे छोटिया जिंस देखिबे दैट इज कॉल्ड एज ligule. So heterospory and seed habits are often exhibited by plants possessing these ligules. Clear? Then what is common in all three, Funaria, Dryopteris and Ginkgo? तो हमारे तीन टा जाकरे फ्यूनारिया ड्रायोप्टेरिस एंड गिंको रे कोन हमर कॉमन रहउची प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया तीन टा जाकरे हमर आर्किगोनिया प्रेजेंट रहउची. देन इन पिनस द विंग ऑफ द सीड डेवलप्स फॉर्म द फिनस प्लांट रे हमर जो फिनस टच कोन जिम्नोस्पर्म तो सेथिरे हमर कोन होची ना विंग ऑफ द सीड्स डेवलप्स फॉर्म सीड्स रो जो विंग गुडा को थ्रू डेवलप होउची ना ओविलिफेरस स्केल जो स्केल लाइक हमर ओविल ऊपर जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर थाए से थ्रू हमर डेवलप होउची सीड्स गुडा सीड रो विंग गुडा. ठीक अछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीशीज. ओके तो दीटा क्वेश्चन एटी हमें पाइबा गोटे हमें जदी कहबा स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप हमर कोटा दैट इज जिम्नोस्पर्म. ओके एंड जदी हमें कहबा ए जो जिम्नोस्पर्म रहला हैज हाउ मेनी स्पीशीज सो इट कंटेन्स 900 स्पीशीज ओनली. क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट. तो साइकस विषय रे हमर इनकरेक्ट कोटा तो सब ऑप्शन मु पढुनी. इट हैज its xylem is mainly composed of xylem vessels. ठीक अछि. तो एटा हमरो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमरो साइकस रे xylem vessel न थाए. देन बाकी हमर रहला आ जा ठीक वेनेसन डाटा एटा ठीक रहला. देन कोरालॉइड रूट्स जोटे हमर रहला सेटी ब्लू ग्रीन एल्गी था एटा भी ठीक रहला. डज नॉट हैव अ well organized female flower. It's also right about cycas but the xylem vessels are absent here. That's why this statement option number 2 is incorrect for cycas. Then largest spawns in the plants world are found in largest sperm. eta भी हमरो important question. Largest sperm in the plants world are found in cycas. The largest sperms in the plants world are found in cycas. तो cycas रे ही हमरो largest sperm मिले. Then transfusion tissue is present in leaves of the transfusion टिश्यू जोटा हमरो जिम्नोस्पर्म रे देखा जाए सेटा कोथरे थाए हमरो ड्रायोप्टेरिस रे थाए एंड साइकस रे भी थाए. ओके सो द राइट ऑप्शन इज बोथ 1 and 3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर इज बोथ 1 and 3. देन द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड. एंजियोस्पर्म ने हमर कोन थिला डिप्लॉइड. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द endosperm was triploid. Okay, but in case of gymnosperm it is haploid n. Then plant group with largest ovule, largest tree and largest gametes is gymnosperm. Okay, तो जिम्नोस्पर्म ही होची हमरो गोटे प्लांट ग्रुप जोथिरे हमरो लार्जेस्ट ओव्यूल देखा जाए एंड लार्जेस्ट ट्री भी से गुडा को देन हमरो लार्जेस्ट गैमेट्स भी देखा जाए. ठीक अछि. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
which of the following plants produce seeds but not flowers? तो हमरो को प्लांट हमरो सीड्स प्रोड्यूस करे बट फ्लावर प्रोड्यूस करे नाही, so that is Pinus gymnosperm. Then cycads have 2 cotyledons but not included in angiosperm because naked ovules. Okay, so cycads have 2 cotyledons but due to its naked ovule it is not included in angiosperm. Clear? Then which of the following is a living fossil? Very very easy question. Living fossil कहले हमारा cycads टा एगुड़ा नुहे मस्त नुहे हमारा स्पाइरोगाइरा भी algae एटा नुहे Saccharomyces हमारा fungus टा yeast जोड़ा सेटा भी नुहे. Then which of the following is without exception in angiosperm? Okay, तो angiosperm रे without exception means सब बड़े देखा जाए को जिनसटा हमारा syngamy. Clear? तो syngamy टा हमारा सब बड़े देखा जाए angiosperm रे. Then which one of the following pairs of plants are not seed producer? Which one of the following pairs of plants are not seed producer? तो को pair of plant आमरो seed produce करंती नाही, that is fern and funaria. Okay, fern और funaria आमरो seed produce करंती नाही. Then angiosperms have dominated the land flora primarily because of their power of adaptability and diverse habitat. Clear? Then transport of food material in higher plants takes place through the higher plant रे आमरो transport of food material occurs through sieve elements. Then in alga, which can be employed as food for human being is एटा algae रो आसीचे. तो algae आमरो तो नाही courses of study रे, फिर भी जेतु question टा अछि, the answer is chlorella. Okay, the alga which can be employed as food for the human being chlorella टाको human being माने intake करंती. Okay, as a food.